कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पहली क्लास की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो अपनी पहली क्लास हो गई। बैकअप अगर आप लोग बैच बन गए तो आई टेक अप द बैकअप क्लास ऑफ दैट। तो पहले आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, एक जी मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वी हैव इन टोटल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स है। पार्ट्स है, शेड्यूल्स है और आर्टिकल्स है। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? पार्ट्स से पार्ट्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल्स शेड्यूल्स है और क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है। आर्टिकल्स। जी सो पार्ट वन का नाम क्या है? व्हाट इज द पार्ट वन? द यूनियन एंड इट्स टेररिज्म। आप लोग नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिए। मैं आपको एक कॉपी भिजाता हूँ कैसा भी, बट आप क्लास में बैठे हुए तो नोट्स बना लीजिए अपने। तो पार्ट वन का नाम ओके क्या सर। है? द यूनियन एंड इट्स टेररिज्म। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी। पार्ट टू का नाम क्या है? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। पार्ट थ्री का नाम क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब पार्ट वन में देखिए, इसमें आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 4। कौन से आर्टिकल्स है? 1 to 4, एक से लेके 4 तक। तो पार्ट वन क्या है? व्हाट इज द पार्ट वन? पार्ट वन में कौन से आर्टिकल्स आते? पार्ट 1 to 4। पार्ट वन में आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक है। पार्ट वन में क्या है आर्टिकल्स? 1 to 4, 1 to 4। एक से लेके 4 तक। पार्ट टू में 4। आर्टिकल्स, पार्ट टू में आर्टिकल्स कौन से है? 5 to 11। पार्ट टू में आर्टिकल्स कौन से 11 है? 5 to 11। 5 to 11। 5 to 11। पार्ट थ्री में क्या है? पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 से 35 तक है। 12 से 35। तो व्हाट इज द पार्ट वन? Part 1, Article 1 to 4, 1 to 4। Union, The the Union and its territory. Union and its territories. Part three, articles 12 to 35, fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स। 5 ठीक है। Rights. नेक्स्ट पार्ट फोर। Rights. rights। पार्ट फोर में आर्टिकल्स कौन से है? आर्टिकल नंबर 36 to 51। आर्टिकल नंबर 36 to 51 क्या है? पार्ट 36 फोर। to 51। आ रही आवाज? हाँ सर, अभी आ रही। तो पार्ट फोर क्या है? Directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। State पार्ट policy. फोर ए क्या है? 51 कैपिटल Part ए। 4A. कौन सा आर्टिकल है पार्ट फोर ए में? 51A2. 51 कैपिटल ए। एक ही आर्टिकल है ओनली। अच्छा ओके, एक ही आर्टिकल है ए। वो A stands for। ए, दैट्स ऑल। ए That's माने it. अच्छा नया ऐड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऐड हुआ। ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ ये? 1946। 1946 सॉरी, 1976। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आता आपको
पार्ट 4A क्या है? कौन सा आर्टिकल है पार्ट 4A? पार्ट 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज और क्या है फंडामेंटल पार्ट 4A का नाम क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज कब कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करे? 1976 1976 में ऐड करे। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट से ऐड करे? कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd चेंज लाए। कौन सा अमेंडमेंट में लाए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पूछता हूँ पार्ट 4A क्या है? इट इज 51 कैपिटल A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कब ऐड करे? कौन से ओरिजिनली था क्या ये? नहीं था, तो बाद में 1976 में ऐड करे। वो टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम? आई थिंक राजीव गांधी। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ओके इंदिरा। वो टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे पूछते? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करे जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और इंदिरा। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से पूछते? स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करे वो टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया? सो व्हाट इज पार्ट 1? Article 8, 1 The to 4. union and its यूनियन territory एंड इट्स in which we टेरिटरी। have कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है territory इसमें? 1 to 4. 1 to 4 1 to 4। पार्ट 2 क्या है? citizenship सिटीजनशिप। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता? 5 to 11 5 to 11। ठीक है, पार्ट 3 क्या है? fundamental rights कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? article 12 to 35 12 to 35। 35 याद रखिए। पार्ट 4 क्या है? तो ये सारे Data ऑब्जेक्टिव्स में ही आते principles हैं। of state जो policy. क्या है? जो इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता, ये जी। सारे जैसे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते 4 ऑप्शंस के साथ, वैसे ही रहेगा ये भी। हाँ, पूरा ऑब्जेक्टिव है ये। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा जी दूं। ये पार्ट्स हो गए, बाद में आपको जी पेपर ओके पैटर्न दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। आप कौन सा है? डिग्री के बाद कर रहे हैं आप लोग? इंटर के बाद कर रहे हैं? मैं डिग्री डिग्री के की बाद, बात कर रही मेरा हूँ। भी डिग्री डिग्री के के बाद बाद है करे तो इसमें। 3 साल, इंटर के बाद करे तो 5 साल। नहीं, डिग्री की बात है। ठीक है, आई शो यू द पेपर पैटर्न। सो पार्ट 4A क्या है? ओके 51 कैपिटल फंडामेंटल A। ड्यूटीज Fundamental फंडामेंटल duties. ड्यूटीज कब ऐड करे इसको? 1976 1976। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो टाइम पे? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। किसका रिकमेंडेशन से? स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये ऐड करे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4। व्हाट इज पार्ट? ये क्या था? पार्ट 4A है। देखिए, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? The union, the executive. The The union union, the executive। executive. यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब खाली जस्ट याद रखिए। पार्ट 5 क्या है? द यूनियन। पार्ट 5 क्या है? यूनियन। तो द एग्जीक्यूटिव नहीं है सर उसमें। उसका सब हेडिंग है वो बाद में जब ओके आर्टिकल्स पे आते हैं जब समझाते हैं, फिर कंफ्यूज होता हूँ। पार्ट 5 क्या है? द यूनियन है। ठीक है, पार्ट 6 क्या है? The states. द स्टेट्स है। पार्ट 7 क्या है? डिलीट कर दिए।
पार्ट 7 इज omitted माने डिलीटेड. पार्ट 7 नहीं है अपने उधर, उसकी जगह है उधर, लेकिन उसमें है नहीं कुछ भी एट प्रेजेंट. अच्छा, मतलब एज सच कुछ भी नहीं है वहां पे. ऐसा कुछ भी नहीं है, था वो डिलीट कर दिया, लेकिन उसको हटाई नहीं अपनी जगह से. अच्छा, तो मतलब क्या था सर अगर था तो? पार्ट जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पार्ट ए, जी पार्ट बी, पार्ट सी बोले क्लासिफाई करे थे अपने स्टेट्स को. हैदराबाद जी स्टेट, अब जैसा 28 स्टेटा है ना, वैसे जी वो टाइम पे अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करे थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बोल के. उसके जी. बाद में वो क्लासिफिकेशन निकाल देके डायरेक्टली 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए थे. ओके. तो वो क्लासिफिकेशन निकाल दिए बाद में उसको डिलीट नहीं करे. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट 7 क्या है? डिलीटेड. ओमिटेड माने डिलीटेड. क्या था उसमें? द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल था. द स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल इट हैज बीन डिलीटेड नाउ. बस इतना याद रखो, डिलीट कर दिए बोल के याद रखो. ओके. नेक्स्ट पार्ट 9. पार्ट 9 क्या है? पार्ट The 8 नहीं है सर इसमें. पार्ट 8. पार्ट 6 हो गया. Because पार्ट 7th you said omitted. Part 8. पार्ट 8 मिस हो रहा आपने. पार्ट 8 आज से बताता हूँ आपको. तो पार्ट 9 Sure. क्या है? व्हाट इज पार्ट 9? the panchayats. द पंचायत. पंचायत. पार्ट 9 क्या है? पंचायत. पार्ट 8 क्या है? ऐसे देयर विल बी पार्ट 8. पार्ट 9 क्या है? पार्ट 8 इज द यूनियन टेरिटरीज. पार्ट 8 आर द यूनियन टेरिटरीज. पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरीज. Territories. पार्ट 9 क्या है? The panchayats. द पंचायत. पार्ट 9 ए क्या है? The municipalities. द म्युनिसिपैलिटीज. पार्ट 9 बी क्या है? Part The 9A. cooperative. पार्ट 9 पंचायत. पार्ट 9 ए द म्युनिसिपैलिटीज. पार्ट 9 बी द कोऑपरेटिव The cooperative सोसाइटीज. society. द 9B. कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Cooperative So what is the next part? Part 10. societies. What is part 10? Part 10, the Schedule. scheduled and tribal areas. The scheduled and tribal areas. Part 11, relations between the union and the states. Relation between union and the states. Part 12 क्या है? Part 11, Part 11 क्या है? Relation between the union and the states. the relation between. You said like to make notes, so I'm making notes. So So part 11 is the relation between the union and the states. states. Okay. Part Part 11, the relation between union and the states. Part 12 क्या है? Part 12, finance, property, contracts, and suits. Suits. Finance, properties, contracts and Contract. suits. Suits. ठीक है. Finance, property, contracts and suits. What is part 13? What is part 13? Trade, commerce, intercourse with the territory of India. Trade, commerce and intercourse
within the territory of India. India. तो क्या है? What is part 13? Commerce, intercourse. Trade, commerce and intercourse within the territory of India. माने business की बात कर रहे हैं. Talking about the business. So what is part 12? Finance, property, contracts and suits. Finance, property, contracts and suits. What is part 13? Trade, commerce and intercourse Trade, within the commerce territory of India. and intercourse within the territory of India. India. Next. Part 14. What is part 14? Service under the Office. union and the state. Services under the union and the states. States. Services under the union and the states. Sir, thoda slow, sir. I'm in 14 actually. 14. What is 14? Services under the union and the states. Services under the union and the states. States. पार्ट 14 के बाद पार्ट 14A आता देखिए. पार्ट 14 के बाद पार्ट 14A. What is part 14A? Tribunals. Tribunals. क्या है 14A? Tribunal. Tribunal. ये भी याद रखिए. Added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो जो भी चीजें हैं ये इंदिरा गांधी के टाइम पे ही आए थे. तो ये भी पहले था नहीं सर, ये ट्राइब्यूनल वाला नहीं था. ये जो ए जो ऐड हो रहा ना बाद में, ये पूरा बाद में ऐड हुआ. नए ऐड हो गया. ओके. पार्ट 14A added by 42nd Constitutional Amendment Act. पार्ट 15 क्या है? Elections. पार्ट 15 elections. तो क्या है पार्ट 15? Elections. What is part 14? Part 14, services under the union and the states. Services under the union and states. What is part 14A? Tribunals. 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 What is part 15? Elections. Part 15 is the election. What is part 16? Special provision related to certain classes. Part 16. Certain special provision relating to certain classes. What is part 16? Special provisions relating to certain classes. Special provisions relating to certain classes. सर ये द ST/SC वगैरह वो उस पे ही रहता ना? Yes. SC, ST उन लोगों के लिए, SC, ST, BC उन लोगों के लिए है, वो BC. Right. Part 16 क्या है? Special provisions related to certain classes. Special provisions relating to certain classes. Next. के बाद part 17. What is part 17? Official language. Official language. Part 17 is official language.
Part 16 special provisions. Part 17 official language. Part 18 emergency provisions. emergency provisions. इसमें आपको याद सर रखना इमरजेंसी प्रोविजन जब भी प्रेसिडेंशियल रूल आता है, गवर्नमेंट रूल आता है, जब इमरजेंसी लगाते हैं, जब वही है माने पढ़ना राइट्स को आपको राइट्स को कर्टेल कर दे रहे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 360. 350 is national emergency. 360 is नेशनल इमरजेंसी. emergency. खाली कॉन्स्टिट्यूशन में खाली emergency लिखा हुआ है, but we call it as national emergency. 356 is president's rule. President's rule. 360 क्या है? Financial emergency. Financial emergency. जीडीपी के ड्रॉप आ गया. Emergency 352 को also called as national emergency बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? National emergency. national emergency. आर्टिकल 356 को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल, या बोलते हैं इसको स्टेट इमरजेंसी. एक ही नाम है पूरे. क्या बोलते हैं इसको? स्टेट इमरजेंसी. आर्टिकल 362 क्या बोलेंगे आप? फाइनेंशियल इमरजेंसी. Financial emergency. ये एक ही नाम है. तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से इसमें है? कौन से पार्ट में है? 18. पार्ट 18. कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है? सर 3 टाइप्स. 3 टाइप्स. कौन से? National Article emergency. 352. आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 में Article 356 में प्रेसिडेंट रूल्स. प्रेसिडेंट रूल. और एक क्या बोला था इसको? स्टेट इमरजेंसी भी बोलते. आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते. ठीक है सर. फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आता है सर? फाइनेंशियल इमरजेंसी माने जब अपने को गवर्नमेंट में मंदी आती, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहता, ना ही पेट्रोल खरीदने का पैसा रहता, ना सैलरी देने का पैसा रहता. तो क्या बोलते हैं उसको? नेशनल इमरजेंसी. सॉरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी. उसके बाद क्या है? पार्ट 19. व्हाट इज पार्ट 19? miscellaneous. Part 19 is miscellaneous. What is part 20? Amendment of the Constitution. Amendment of the Constitution. Part 20 is amendment of the temporary Constitution. ठीक है. Amendment of the Constitution. समझ आ रहा? पार्ट 21 क्या है? temporary transition and the special provision. Temporary, transitional and special provisions. special number provisions. 21. 21. तो क्या है? What is part 19? Miscellaneous. Part 20. What is part 20? Amendment of the Constitution. Article number 3. Amendment of the Constitution. Amendment of the Constitution. Article number 360. Article number 360.
जो मेजर आर्टिकल 360 हैं वो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको सर याद रखना मिसलेनियस है। क्या है सर? मिसलेनियस माने थोड़े प्रोविजंस रहते हैं, उसका आपने डीप जी में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो मिसलेनियस है वो, ठीक है। जो मेजर चीजें पूरे जो छुड़ गए ना, वो इसमें छोटे छोटे चीजें डाल दी, जी सर जैसा डेफिनेशन है, जी ठीक है। जी व्हाट इज पार्ट 21? temporary transitional and special provisions. टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड And स्पेशल प्रोविजन, provisions. ठीक है, लिख लिए। हेलो, पर कीजिए sir. लिख थोड़ा लिया आप पर लोगों? कीजिए sir. यस आप ऑडिबल है। आप ना थोड़ा स्लाइड छोटी करिए वो, बिकॉज आप बड़ी कर दिए, शायद जूम किए तो वो ऊपर का नीचे का नजर नहीं आ रहा। यस पार्ट थैंक यू। पार्ट 19, पार्ट 19 Miscellaneous. मिसलेनियस, पार्ट 20 आर्टिकल 360 Article 360 amendment of the Constitution. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 21 Temporary transitional and special provisions. टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, Provisions. ठीक है। पार्ट 22, व्हाट इज पार्ट 22? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल commencement, कमेंस authoritative text in Hindi and Authoritative repeal, text in Hindi and repeal. repeals, ठीक है। Repeals. तो क्या क्या है? What is 22. part 22? Short title commencement authoritative text and in Hindi and repeals. In Hindi and repeal, तो कितने पार्ट्स हो गए पूरे? 22 22। अगर सब पार्ट्स मिलाए तो 25 हो गया। If you add the sub parts, it is also called as 25. Okay. Let us revise from the beginning. What is part 1? Article Union 1 and to its territory. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी Union and its territory. Territory. What is part 2? Citizenship. सिटीजनशिप Citizenship. Articles. 5 to 11. Part 3. Article Article 12 to 35. Fundamental rights. Fundamental rights. What is part 4? Article 36 to 51. Article number 36 to 51. क्या है? Directive principles of state policy. Policy. Part 4A क्या है? Article 51A. Article 51A. एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है, दूसरा आप डिवाइड करिए।